Good morning, friends. I welcome you all to this 51st webinar of our consortium. And today we got a young speaker. Without going into much details, I would like to hand over to the moderator, Bhupendra Bhai. Bhupendra Bhai, all yours. Thank you, Vijayji. Respected seniors and my colleagues, I, on behalf of Tax Friends Mumbai, Tax Practitioners Association Thane, Legal Tax Relief Kolkata, Income Tax Bar Association Varanasi, Income Tax Bar Association Prayagraj, Josh Professional Foundation, Association of Tax Practitioners Vellore, and Bhiwandi Tax Practitioners Association Bhiwandi welcome today's speaker, CA Aanchal Kapoor ji, and all the participants who have logged on to Zoom platform, and all those who are on the YouTube for webinar on charitable institution on GST along with health and education sector. Friends, after successful completing 50 webinars, that is a golden jubilee on various topics by eminent speakers, and first of its kind of virtual national tax conference, the consortium of associations have joined their hands to impart the knowledge to all the professionals in their second innings. I'm mentioning the second innings because first was the first innings of 50 webinars. I thank Vijayji and all the members of the consortium of associations to appoint me as moderator and to start the innings. Friends, for the innings and to start the game and to win the game, we need a seasoned captain to guide all its players. May I take this opportunity to introduce our today's seasoned captain, CA Aanchal Kapoor ji. Welcome everybody. Welcome Aanchal ji. With a brief introduction of Aanchal ji, I would like to proceed as follows. Aanchal ji is a qualified chartered accountant and she has cleared her CA final exams in the very first attempt, and that too with a rank. She is a gold medalist. She has bagged gold medal at the time of her graduation. She is also a third ranker in her P1. She has, to her credit, she has various certification courses and also a certified course of GST from the Institute of Chartered Accountants. She is in practice for more than 10 years in the field of indirect taxation. She has practical exposure in the field of GST by handling various departmental work. She has delivered more than 50 plus lectures, webinars, seminars to the members of to the members of the industry and in practice in the cities of Punjab, Haryana, Delhi, and Mumbai. She has also authored various articles which were published and are being published in various journals like AITFP Journal, Tax Management, Tax Guru. Recently, she delivered a successful lecture across India on GST refund. With this small profile of hers, I would like Aanchal Kapoor ji to take over the charge and guide all the players as a captain. Thank you. Thank you so much, sir. A very good morning to all the viewers. And first of all, I thank Tax Friends and the other tax bar associations for giving me this opportunity to interact with you all. Hope I turn this session informational for you, and it's all my pleasure to interact with you. With this, sir, can I share the PPT, please? Yes, sure. Yeah. The stage is yours. Sir, is the PPT visible? Yes. Yes, Please yes. start the slideshow. Yeah. Okay. Now, we will be covering a few topics today like healthcare sectors. So what is our main focus? The main focus is on charitable institutions. Along with it, we will be covering the healthcare and education sector in detail.
Apart from this, I will also be discussing that what about the ITC of the expenses incurred during the COVID period, certain CSR activities that are being undertaken. So now, first of all, we'll be starting with the healthcare sector. I have made a small PPT here on the topic so that it can give you the direct, it will take you direct into the topics. So let's start it with starting with the healthcare sector. So healthcare sector is the bone of any economy, and especially in this COVID times, this sector has become all more important. So this sector, healthcare sector, India is known for the travel tourism, the health tourism, because it has become a health hub for the various countries. So government, as a result, it is a basic necessity also, and one of the growing section of the economies also. In order to promote this, various benefits have been given to this sector. If I talk about it, in case of healthcare sector, when we talk about it, we always get to think about the exemptions. And so we will be discussing the exemption of healthcare sector, that when it can be availed and when it cannot be. Now, let's come towards it. First of all, if I take you, what is the charging section? Charging section is section 9. Section 9 says that it talks about the levy. And let me tell you, whatever are the goods and services, all are covered under the GST. So is the healthcare also. So if we talk about levy, the levy on healthcare sector is created by section 9. So first we have levy. Then what is there? The rate is being prescribed. When the rate is being prescribed, the healthcare services are covered under SAC 9993, taxable at the rate of 18%. But once the levy is created, rate is prescribed, then we come to the exemption step. And the exemption related to healthcare services are covered under entry number 74 of the mega exemption notification 12 by 2017. Whenever we have to check the services notification exemption, we always refer to notification 12 by 17 as amended from time to time. So entry number 74 is the entry which deals with the healthcare sector. Sir, in order to simplify the particular few things relating to healthcare sector, I have reproduced a small list here for you. After this, we will be going through the legal provisions, that how these will become exempt or how these will become taxable, right? Remember, whatever is being given to the in-house patients, inpatients is exempt. May it be medicines, may it be consumables, may it be implants, right? So whatever is given to the inpatients is exempt, including the food supplies, including the room rents which are charged by the hospitals, diagnostics, even the diagnostics are free, pre and post counseling are also exempt, right? The retention money which is kept by the hospitals is also exempt. But what about the medicines? Some medicines which are given to the inpatients are exempt. But if you sell the medicines to the in-house patients, inpatients, that is exempt. But whatever services you are giving to the attendants and the visitors, that are all taxable. So even if the hospital is having rental incomes, that is also taxable. Rooms, sir, I got a query that aajkal hospitals they are giving the packages. If they are giving the packages, which includes the one attendant also and the patient also, so what the hospital has to bifurcate it. You cannot take the benefit of composite supply on it. If it is whatever is the charges for the inpatients, that will be exempt. But whatever is being charged from the attendants will become taxable. Now, with this comprehensive list being produced in front of you, let's move to the legal provisions. Rate. Sir, rate I have already discussed with you. It's 18% unless exempted under notification 12 by 2017. Whatever are the rates for the healthcare sector, I have reproduced here for your ready reference. Now, we come to the basic entry number 74, which deals with the exemption. This is our main entry. And sir, whenever we start the concept, we always refer that what is the definition of the service. So let's read first the entry number 74 and similar entry number 77 of IGST. So I have mentioned both the numbers here. What it says,
healthcare services by a clinical establishment. It means अगर मैं इसको reproduce करूं in A part को simple words में, सर्विस कौन सी होनी चाहिए? हेल्थ केयर सर्विसेज. प्रोवाइडर कौन होना चाहिए? तीन में से कोई एक प्रोवाइडर हो सकता है. इट कैन बी अ क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट. What is clinical establishment? We will just be dealing with it. It can be an authorized medical practitioner or a paramedics. Sir, ये तीनों terms along with the healthcare we will be taking up in a few minutes because ये notification 12/2017 में ही described है. Service, सर तीन चीजें देखनी है. प्रोवाइडर कौन, रिसीवर कौन, सर्विस क्या. दिस इज द मेन थिंग. सर्विस क्या? हेल्थ केयर. प्रोवाइडर कौन? तीनों में से कोई एक. और क्या प्रोवाइड करे? प्रोवाइडेड टू एनी पर्सन. आप किसी भी पर्सन को हेल्थ केयर सर्विसेज इन तीनों में से प्रोवाइड करोगे, देन इट बिकम्स एग्जेम्प्ट. राइट नाउ अगर नेक्स्ट पोर्शन पे हम चले, सेकेंडली इट सेज transportation of a patient in an ambulance. So simply saying ambulance services are also exempt, provided by any person to any person. अभी मैं ambulance का list जो आपको relation है, we will also be dealing with the healthcare services. So this is our basic entry number 74, which talks about healthcare services अगर provide की जाएंगी तो वो exempt हो जाएंगी, provided these three are the providers. Right now, what is healthcare services? So the definition of healthcare services is given in the notification itself in clause ZG. What it says, sir, healthcare services means simply a service. Means, this is the means definition. It says that whatever is included here, mentioned here, is a healthcare services, nothing more than that. Now it says any services by way of diagnosis, treatment, care of what? Abnormality, pregnancy, anything in recognized system of medicine in India. अगर आप किसी को डायग्नोस कर रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, किसी abnormality का, किसी तरह के डिसीज का, प्रेगनेंसी का, so that is all covered under the healthcare services. But it should be in the recognized system of medicine. What is recognized system of medicine? Here it is. So these are the recognized system of medicine. Allopathy, yoga, naturopathy, Unani, homeopathy, and these systems, those are mentioned here, are the recognized systems in India. So अगर आप इनके according किसी का treatment कर रहे हैं, then you will be covered in the healthcare services. So starting part हमने जो healthcare services का discuss किया था, that dealt with the means. Now we come also to the includes part, and includes the services. मैंने आपको बोला था transportation of passengers, transportation of the patients to and from a clinical establishment is also the part of healthcare services also. So ऐसा बोलूं, patient को आपको to and from the clinical establishment लेके जाना itself is the part of healthcare services, howsoever you are going to take them, whatsoever the conveyance you are using. But if you are using transportation, ambulance as a service to the patient, then it is also exempt specifically under the clause B of notification 74. So ultimately, ambulance service, transportation of the patient, that all is exempt. But ये तो बात हुई means और includes definition की, right? What about the does not include? It does not include hair transplantation, cosmetic or plastic surgery. Sir, all these, as you know, 17(5) में इनका ITC भी लेने वाले को भी disallowed है, और hospital अगर आप इन तीनों चीजों में involved हैं तो आप नहीं माने जाएंगे कि आप health care service दे रहे हैं, right? But ये हेल्थ केयर सर्विसेज बन जाएंगी. कब बन जाएंगी? अगर ये किसी के डिफेक्ट्स को रिमूव करती है, इंजरी या ट्रॉमा से बाहर आने के लिए करती है. आई टेक एन एग्जांपल विद यू. लेट्स सपोज अ पर्सन मीट्स विद एन एसिड अटैक. Now, in order to overcome from that acid attack, the person is given a cosmetic or a plastic surgery, I would say. So then in that case, because it is to remove some injury, trauma, defect, abnormalities, then it will become healthcare services. But if we talk about the
the fashion industry and they go for any sort of cosmetic or plastic surgeries or hair transplantation, as of now are very common all over. So all these will not form part of healthcare services. So lots of questions will be originating in your mind regarding the stem cells, nursing homes, etc. All we will be taking up in the due course. Now, this was the definition of healthcare services provided in these case to any person is exempt. Now, हमने कहा था provider कौन होने चाहिए? There can be 3 types of providers. So first we dealt with it must be a clinical establishment. Now, what is clinical establishment is also defined under clause 7 of same notification. It says clinical establishment means a hospital, nursing home, clinic, sanatorium, by whatever name you called it, it is a clinical establishment. Even उन्होंने कहा जहां सिर्फ diagnosis होता है, treatment होता है, care होती है for the injury, deformity in any recognized system of medicines. और recognized system of medicines हमने अभी discuss की है. So all these will become a clinical establishment. Sir, even the independent diagnostic centers are also covered by this entry. It says a place establishment as an independent entity or a part of an establishment to carry out the diagnostic or investigative services of diseases. So even agar aapka standalone diagnostic center hai, it is not connected with any hospital, not inside the hospital, even then you enjoy the status of a clinical establishment and the services will be exempt services, right? Moving ahead. Second हमने कहा था provider कौन हो सकता है? Authorized medical practitioner. Sir, मेरा hospital नहीं है. I'm just a doctor. I'm running a clinic. So I will be covered under authorized medical practitioner. Now, it has 2 parts. Authorized medical practitioner आप कब बनेंगे? जब आप council के साथ register हो जाएंगे. As we CAs and advocates also register to become a practicing member. Similar way, if you are recognized with the council, but even the apprentice, etc. are covered. So they said if you have it also includes a medical professional having the requisite qualification to practice is also under the recognized system is also an authorized medical practitioner. Agar aapke paas requisite qualification hai, even then you qualify to be an authorized medical practitioner. Third, who was the provider? Paramedic staff. Sir, आजकल तो वैसे ही we are just talking about them all the time and they are our corona warriors. So paramedic staff, sir, paramedics की definition हमें GST नहीं बताता है, ना ही हमें notification बता रही है. So paramedic staff, if we take it in the journal meaning, includes your trained nurses, trained physiotherapists, technicians and lab assistants. So अगर ये तीनों provider हैं और ये service किसी को भी provide की जाए, then in that case the services of healthcare are exempt. This was the legal entry number 74 along with the definitions, जिसने कि हमारे cover किया hospital industry को, the healthcare industry को. Other than this, सर अभी इसके हम केस स्टडीज साथ साथ अभी विद इन अ फ्यू मिनट्स डिस्कस करेंगे. लेट मी फर्स्ट कंप्लीट द एंट्रीज. नाउ वी कम टू एंट्री नंबर 75. Sir, there are certain types of biodegradable waste that are generated. It may be the bandages, it may be the scarred body parts or something. So the entities, the providers, what is the service? Treatment of the biomedical, treatment or disposal of the biomedical waste. Provided by, who is the provider? It can be a common biomedical waste treatment facility provided to whom? To a clinical establishment. Then the services are exempt. So whatever is the discarded blood, the microbiological cultures or whatever, if you are into the treatment or disposal of those biomedical waste, to provided to whom? Clinical establishment. सर एक बात याद रखिएगा, अभी हमने जो सर्विसेज डिस्कस की थी ना हेल्थ केयर सेक्टर के लिए, what we talked about, the outflow, the outgoing, the supply made by hospital is exempt. So this is the first services that I discussed with you, that is the input service of a hospital. Input service of a clinical establishment.
Sir, hospitals में आप देखेंगे, it is not a zero rated sector. I will not say it is free from GST altogether. No, not at all. Because the output is exempt, but the input is not exempt in this sector until or unless specifically provided. So if you say implants, taxable, the medicines, taxable, the rentals, taxable. So inputs are, it is not a zero rated sector where we say the inputs and outputs both are out. No, it has inputs taxable, outputs have been made exempt, right? Coming to the next entry. The next entry is about the cord blood banks. Even this entry has been made tax free. So अगर आप आजकल preservation of stem cells होता है, as you know, in case of the birth of a child, so cord blood banks की जो भी facility cord blood banks provide करते हैं to any person for relating to their preservation, etc. In that case, all services are exempt. Even the services of a veterinarian, even that is exempt if it is relates to the healthcare of the animals and birds. So this is entry number 46. Sir, iske alawa, one of the last entry, if you are a rehabilitation professional. सर रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल यानी कोई ड्रग्स छुड़वाने हैं या कुछ नार्कोटिक्स एक्सेट्रा के अंदर आजकल बहुत सारे काउंसलिंग थेरेपी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स चलते हैं. So, अगर आप एक rehabilitation professional हैं and you are providing services anywhere, may it be a medical establishment, may it be an educational institute, or may it be an institute run under section 12AA entry. If you are a rehabilitation professional, then the services provided by you of rehabilitation therapy is 100% exempt by virtue of entry number 74A of notification number 12 by 2017. Right? Moving ahead. Sir, इसके साथ हमारी entries जो हैं वो तो finish होती है. So what was our main entry? The main entry was entry number 74. Now, if I move ahead, what are the relevant issues? Sir, law to हमने पढ़ लिया, but lots of questions comes to our mind, and let's discuss those with the help of the notification and the circulars. What it says, हम पूरा verbatim read नहीं करेंगे. I will just explain you the concept so that we are able to take up the other topics also. Sir, question arise हुआ, doctor, even if you are under employer-employee relationship or you are receiving the consultancy charges, both are exempt. Both are exempt. I have reproduced here the circular numbers also for your reference. Circular number 32 says both are exempt. Second thing, सर जब मैं इसका सेकंड पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगी, इसके साथ साथ मैं गंगाराम हॉस्पिटल का केस भी डिस्कस करना चाहूंगी. सर गंगाराम हॉस्पिटल के केस में क्या था? हॉस्पिटल यूज्ड टू प्रोवाइड चेंबर्स टू द डॉक्टर्स, and hospital, for example, used to take 10,000 rupees. 7,500 was given to the consultant or the technicians, and 2,500 was retained by the hospital itself. Now the question arises, doctor ki services to free hai, 7,500 goes out. What about the retention money which was kept by the hospital? So government came there, the judgment of the AR of Shri Gangaram Hospital came up. Along with this circular also, they dealt with the issue that whatever is the retention money being kept by the hospital is also not chargeable to tax and is exempt. So the retention money of hospitals also made exempt. Third issue that was dealt, जो मैंने आपके साथ already dealt for किया, food supplies. Sir, in patients ko, in simple words, whatever you provide, may it be the room rent, may it be the food supplies, those all services are exempt. So if it is, आपको पता है patients का खाना separate आता है. So the charges which the hospital charges, including their room and the food, etc. So whatever food supplies is made to inpatients is exempt. So these are the three issues that were dealt by circular number 52. 32. Now, I come to circular number 51. So circular number 51, I have reproduced here for your reference. This is the circular exactly. But for the ease of understanding this circular, I have put in a small diagrammatic presentation. Now, let's have a look. Sir, ambulance. This circular 51 deals with the ambulance service.
एम्बुलेंस सर अभी हमने डिस्कस किया था, अगर एक प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर पेशेंट को एम्बुलेंस दे, it was the part of the entry number 74 itself and was made exempt 74B. It said yes, entry number 74 ने इसको पहले ही exempt कर रखा था. Then what was the issue? Issue arise, government, local authority and the governmental enterprises. The government here means both the central government as well as the state government. इनको कुछ फंक्शंस इंट्रस्ट किए गए हैं पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के अंडर सेक्शन 243 W and G. So what happened? This private service provider used to provide the ambulance service to them to carry on their functions entrusted to them. So as a result, a separate entry was introduced that if you are a service provider and you are not taking ambulance provider and you are not directly taking to patient, but whereas you are giving it to the government, local authority or the governmental enterprises, even then you are exempt by way of serial number 34, 3 and 3A of notification number 12/2017. Right? So this is the entire summary of this circular, which I've reproduced in front of you in a diagrammatic form. Simply, ambulance service, even if provided to the government, local authority, GE, is exempt. Right? Moving ahead. Now, how it said that it is exempt, let's have a look. Sir, अगर तो मेरा सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है प्योर सर्विस का ही, आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर, आई जस्ट हैव टू टेक द पेशेंट एंड आई हैव जस्ट टू गिवन इट टू द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी. If it is a pure service, it is 100% exempt, serial number 3. But if it is a composite service, हो सकता है मेरा कुछ एग्रीमेंट कॉम्पोजिट हुआ है जिसमें मुझे कुछ गुड्स भी सप्लाई करने हैं, और अगर गुड्स की वैल्यू 25% ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई तक ही है, then it is also exempt. So basically this circular, this entry serial number 3 or 3A dealt with the ambulance service being provided by the private service provider to whom? To government, local authority or GE, and not directly to the patients. Because when it is directly provided to the patient, it's already exempt under serial number 74 of the notification. So here we dealt about serial number 3 and 3A. Now, moving ahead. Sir, circular number 92, not only in this case, whereas we refer it in many cases. What this has to say, it says that free gifts and samples. Sir, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें सबसे ज्यादा फ्री गिफ्ट्स और सैंपल्स जाते हैं. It is all the medicines are supplied on samples firstly to the doctors, to the medical staffs, and etc. etc. So as a result, government came up with the circular 92 and explained the concept of free samples. Sir, I have made the concept of free samples here. Case 1 एंड केस 2. पहले हम केस 2 के साथ डील करेंगे. सिंपल, अगर आप फ्री सैंपल्स प्रोवाइड कर रहे हो, इन दैट केस योर क्रेडिट इज ब्लॉक्ड अंडर सेक्शन 17(5)(h. Right? The same gets reversed in the hands of supplier under the provisions of 17(5)(h. यानी अगर आपने एक मेडिसिन परचेज की और आपने उसको किसी को गिफ्ट दे दिया, फ्री सैंपल दे दिया, तो आपको उतना क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा as per the provisions of section 17(5)(h. Now, second case. Let's suppose I am providing a free sample to my sister concerned, to a related person. Now, because of the virtue of Schedule 1, this becomes taxable because supplied to the related entity by virtue of Schedule 1, entry number 2 is taxable. Although consideration is not involved, free samples thing, but still where the consideration is absent, Schedule 1 takes it as a supply. सर, अगर आपकी आउटपुट टैक्सेबल कर दी गई तो आपको क्रेडिट रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, आप आउटपुट के ऊपर जीएसटी पे करेंगे. अब बात आई जीएसटी पे करेंगे, व्हाट विल बी द वैल्यूएशन? The valuation will be as per Rule 27, which is OMV, fair market value, or open market value, which is leading to Rule 30, जिसमें कि हम cost of production plus 10% of cost भी add कर देते हैं. So if you are distributing free samples,
If it is not a supply taxable, you have to reverse the credit. And if by virtue of Schedule 1, it becomes a taxable supply, then in that case, आप क्या करेंगे? You have to pay this tax on the output supply. Now, moving ahead. Very, very important circular I am discussing here by the way of the diagrammatic presentation, which talks about, what it talks about, the medicines that gets expired. The medicines that gets expired, how to deal with those expired medicines. So I request all of you to be with me in this part of the presentation, please. Here, circular number 72. I just want not to lose insight of it, because otherwise sometimes it becomes difficult to understand. Circular number 72 dealt with the time when the medicines become expired, how we have to deal with it. Sir, example के through चलेंगे. Let's see how we have to proceed. ये हमारे manufacturer भाई साहब थे. He was having a cost 80 rupees cost की, और ITC 4 रुपए इन्होंने ले लिया. सर 5% पे टैक्सेबल मेडिसिन मान रही हूँ, यहाँ 80 है, और जब कस्टमर के पास यहाँ जानी थी तो ऑलमोस्ट 100 रुपए पे 5%, 5 रुपए की, 105 रुपए की वो मेडिसिन कस्टमर को सेल होनी थी, राइट? Cost was 80 to the manufacturer. Manufacturer sold it to the wholesaler at 90 rupees. 5% पे GST लगाया. होलसेलर ने रिटेलर को सेल कर दी मेडिसिन 95 पे, और इनको 95 GST 4.75 पे आके पड़ गई. लेकिन जब ये मेडिसिन रिटेलर के पास पड़ी हुई थी, it got expired. He was to sell it, but it got expired. Now it was not sellable. It was to be returned back to the manufacturing company. Now, what this circular says and what are the remedies? There are 2 remedies available to you. What? एक तो आप उसका क्रेडिट नोट काट दीजिए, क्रेडिट नोट काट दीजिए और रिटर्न प्रोसीजर डाल दीजिए. सर, उस केस में ये सारे अमाउंट रिवर्स होते जाएंगे. उस केस में प्लीज बी विद मी, उस केस में ये सारे अमाउंट रिवर्स होते जाएंगे, क्योंकि मैंने 95 की परचेज की, मैं 95 की रिटर्न डालूंगी, जिसने 90 की वो 90 की रिटर्न डालेगा, और अल्टीमेटली दवाई मैन्युफैक्चरर के पास पहुंच जाएगी और वो इसको डिस्ट्रॉय कर देगा. अभी हम देखेंगे. सेकेंड ऑप्शन इज नो, वी आर नॉट गोइंग टू डू इट. हम इसको एक फ्रेश सप्लाई मानेंगे. हम पुरानी वाली का क्रेडिट नोट नहीं काट रहे हैं. वी आर टेकिंग इट एज अ फ्रेश सप्लाई. हम सेल्स इनवॉइस काटेंगे. सर, अगर आप सेल्स इनवॉइस काटोगे तो ऊपर वाली ट्रांजैक्शन एक इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन बन जाएगी और नीचे वाली ट्रांजैक्शन एक इंडिपेंडेंट सेपरेट ट्रांजैक्शन बन जाएगी. So let's have a look how retailer is going to deal with it, and so do the entire chain. Let's see. Medicines got expired here with the retailer. Now, retailer can be a registered person or retailer can be an unregistered person or a composition. Sir, जब मैं registered person ले रही हूँ तो मैं सारी चेन को रजिस्टर्ड मान रही हूँ, और जब मैं अनरजिस्टर्ड ले रही हूँ तो मैं सारी चेन को अनरजिस्टर्ड मान रही हूँ, राइट? नाउ इफ द पर्सन्स आर रजिस्टर्ड पर्सन, और ये क्या कर रहे हैं? फ्रेश सप्लाई. क्या कर रहे हैं? फ्रेश सप्लाई. यानी ये सेल बिल काट के रिटर्न कर रहे हैं, ये जो है क्रेडिट नोट के थ्रू रिटर्न नहीं कर रहे हैं. नाउ सर, इस पर्सन को मेडिसिन कितने की पड़ी थी? 95 पॉइंट्स. अब ये उस पर प्रॉफिट तो नहीं करेगा. ये कहता है जी मुझे जितने की कॉस्ट की मैं उतने पे वापस कर देता हूँ. 95 रुपीज प्लस 4.75 का जीएसटी था, क्योंकि ये एक टैक्सेबल पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन है, ये सेल इनवॉइस काटेगा 90. बट प्लीज मेक इट श्योर इट हैज नो रिलेशन विद द अपर एंट्री. अपर एंट्री इज अ सेपरेट एंट्री, इट इज अ फ्रेश सप्लाई. सो इन्होंने जो ट्रांजैक्शन स्टार्ट की 95 रुपीज पे इन्होंने ये मेडिसिन वापस कर दी. होलसेलर के पास सर रिटर्न नहीं आई है, नई मेडिसिन आई है. अब वो नई मेडिसिन उसके पास कितने की आई? 95 रुपीज 4.7 पैसे का इनपुट आ गया उसके पास. नाउ ये होलसेलर भी इसको रिटर्न कर देगा. सर, लास्ट टाइम somebody asked me the problem that यहाँ 90 है, यहाँ 90 और आपने 95 दिया. व्हाई? इसने परचेज 95 पे किया. इट इज अ फ्रेश सप्लाई केस. मैं बिल्कुल 90 ही लूंगी जब मैं रिटर्न करूंगी क्रेडिट नोट के थ्रू. सो क्रेडिट नोट वाले में मैं सेम अमाउंट उठाऊंगी क्योंकि वो इसकी एंट्री की कैंसलेशन है. बट नाउ व्हेन आई एम मेकिंग अ फ्रेश सप्लाई, आई कैन टेक द वैल्यू एट विच द गुड्स आर सप्लाइड टू मी. 95 पे ये होलसेलर मैन्युफैक्चरर को वापस कर देगा.
मैन्युफैक्चरर के पास परचेज आ गई है सर, परचेज, इट इज नॉट अ रिटर्न, इट इज अ परचेज ऑफ मेडिसिन। अब जब इसके पास परचेज आई, इसको क्रेडिट कितना मिला, 4.75 का। ये मेडिसिन मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रॉय करनी है। एक परचेज जो सेल नहीं होनी, प्रोविजंस ऑफ 17(5)(h विल गेट अट्रैक्टेड। 17(5)(h अट्रैक्ट होते ही मेडिसिन डिस्ट्रॉय करनी है, क्रेडिट रिवर्सल कितना होगा, 4.75 का क्रेडिट जो है वो खत्म करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरर को। सर मैं साथ ही कंट्रास्ट में लेके जाती हूँ, 2 मिनट के लिए हम सेकंड केस को छोड़ते हैं। आई जस्ट टेक यू टू डायरेक्ट थर्ड केस, क्रेडिट नोट, वाइस वर्सा। इस केस में मैंने सेल इनवॉइस काटा था, इनवॉइस फ्रेश सप्लाई, यहाँ पे क्रेडिट नोट के थ्रू रिवर्सल करूंगी। तो व्हाट विल हैपन, रिटेलर आपके पास ये मेडिसिन आई 95.475, आप इसको वापस कर रहे हो, व्हाट इज द अंडरलाइंग डॉक्यूमेंट, इट इज जीएसटी क्रेडिट नोट। आपने ये क्रेडिट नोट के थ्रू वापस की होलसेलर को, होलसेलर तुम्हारे पास वापस आई है मेडिसिन, अब तुमने भी अपनी एंट्री को रिवर्स करना है। तुम्हारे लिए जो क्रेडिट नोट तुम इशू, सर इसमें जो सप्लायर होता है दैट इशूज द क्रेडिट नोट, राइट। सो हेयर द क्रेडिट नोट, बिकॉज ये इस एंट्री का रिवर्सल है, क्रेडिट नोट कितने का जाएगा, 90 रुपीज का ही। सप्लायर गिव्स द क्रेडिट नोट, द मैन्युफैक्चर, यहाँ पे होलसेलर रिटेलर को क्रेडिट नोट देगा, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को क्रेडिट नोट देगा, बिकॉज इन जीएसटी रिजीम द क्रेडिट नोट इज ऑलवेज इश्यूड बाय द सप्लायर। यहाँ क्या था, इनवॉइस था, इट वाज फ्लोइंग लाइक दिस, नाउ दिस इज द केस ऑफ क्रेडिट नोट, इट विल फ्लो लाइक दिस। नाउ जितने भी इसने सेल करी थी ये उतने का ही क्रेडिट नोट देगा, 90 रुपीज का, सॉरी जस्ट मूव्ड ऑन, 90 रुपीज का। नाउ जब ये इसको क्रेडिट नोट देगा, ये मेडिसिन इसके पास वापस आ जाएगी क्रेडिट नोट के थ्रू, रिवर्सल ऑफ द एंटायर ट्रांजैक्शन। अब जब ये मेडिसिन वापस आ गई, अब इसकी कॉस्ट कितनी थी, 80 रुपीज, 4 रुपए क्रेडिट लिया था, मेडिसिन वापस आ गई, सेल नहीं हुई, क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा जब मैन्युफैक्चरर उस मेडिसिन को डिस्ट्रॉय करेगा। व्हाट विल बी द रिवर्सल, कॉस्ट का रिवर्सल होगा। सर यू कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। यहाँ पे क्योंकि ये फ्रेश सप्लाई है, रिवर्सल होगा परचेज का जो अब मैन्युफैक्चरर करेगा, क्योंकि ये क्रेडिट नोट के थ्रू है, इसमें रिवर्सल होगा कॉस्ट का जिसपे उसने सप्लाई किया था। So as a result, the 4 rupees credit has to be reversed here by virtue of section 17(5)(h). So ये तो बात थी जब मेरे persons registered थे. Now I just go back, come to the point when the retailer is a composition on an unregistered person, right? When he is a composition or an unregistered person, sir ये क्या issue करेगा, ये tax invoice भी नहीं कर सकता, फ्रेश सप्लाई का केस ले रहे हैं, और ये क्रेडिट नोट भी नहीं कर सकता, ये तो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा अगर कॉम्पोजिशन वाला होगा। फ्रेश सप्लाई अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रेश सप्लाई। सो क्या इशू करेगा, बिल ऑफ सप्लाई या कमर्शियल डॉक्यूमेंट, अनरजिस्टर्ड वाला कुछ भी इशू कर सकता है। इसको ये क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड चेन है तो इसमें कॉस्टिंग क्या है, पूरी 99 रुपीज, इसमें जीएसटी सेपरेट नहीं होगा बिकॉज द पर्सन इज अनरजिस्टर्ड पर्सन। ये होलसेलर को वापस आ गई, होलसेलर ने परचेज कर ली, होलसेलर से मैन्युफैक्चरर ने परचेज कर ली। सर मैन्युफैक्चरर ने तो क्रेडिट लिया ही नहीं होगा परचेज का, क्यों नहीं लिया होगा, सर इसको कौन सा डॉक्यूमेंट आ रहा है, जीएसटी इनवॉइस आ ही नहीं रहा। व्हाट इज ही गेटिंग, ही इज जस्ट गेटिंग अ बिल ऑफ सप्लाई और अ कमर्शियल डॉक्यूमेंट। So as a result, he will not take the credit. As a result, जब ये मेडिसिन को डिस्ट्रॉय करेगा, ये रिवर्सल भी नहीं करेगा। जब ये डिस्ट्रॉय करेगा, ये रिवर्सल भी नहीं करेगा, राइट? So as a result, if I talk about the composition person and the unregistered person, so registered के केस में हमारे पास दो ऑप्शंस है, फ्रेश सप्लाई भी कर सकता है और क्रेडिट नोट के थ्रू भी कर सकता है। कॉम्पोजिशन और अनरजिस्टर्ड के केस में भी जब वो फ्रेश सप्लाई करेगा, सो दिस विल बी द मैकेनिज्म। नाउ अगर आपका टाइम पीरियड एक्सपायर्ड हो गया हुआ है क्रेडिट नोट इशू करने का, यू नो इट इज सितंबर, यानी सितंबर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न विच इज अक्टूबर 20th। अगर आप उसके बाद मेडिसिन रिटर्न करते हैं, सो आपका जो क्रेडिट नोट जाएगा
that credit note will be a commercial credit note. So simply saying, अगर आप टाइम पीरियड के विद इन है तो आप एक जीएसटी क्रेडिट नोट इशू करेंगे, अगर आप टाइम पीरियड को एक्सीड कर चुके हैं तो आप एक कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू करेंगे. सो दिस वाज द एंटायर मैकेनिज्म. जब आपको मेडिसिन रिटर्न करनी है, अकॉर्डिंग टू मी, whenever we return a particular thing, credit note, अगर आप टाइम पीरियड के विद इन है, so credit note is the best mechanism to go for the returns rather than by issuing a fresh supply document. And you see also कि यहाँ पे रिवर्सल ज्यादा है और यहाँ रिवर्सल कम है. So with this we are over with the circular number 72, expired drugs. Now I discuss certain case laws with you on this, on these matters only. Sir, श्री गंगाराम केस का जो हॉस्पिटल का केस है वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया है. Now I come to the next case law, JC genetic. बहुत सारी क्वेरीज आती है सर मुझे इसके साथ के रिलेटेड. What are those? That in this case पर्सन एक डायग्नोस्टिक सेंटर खोला हुआ है. Let's discuss it by the way of a normal conversation point of view. पर्सन ने एक डायग्नोस्टिक सेंटर खोला हुआ है, वो खुद कुछ नहीं करता, सिर्फ सैंपल कलेक्ट करता है, किसी और डायग्नोस्टिक कंपनी के साथ उसका टाई अप है, उनको सप्लाई करता है, वहां से रिपोर्ट कलेक्ट करता है, आगे दे देता है. So will he be qualifying as a healthcare diagnostic center, healthcare services? No, not at all. He is just an agent who is receiving the services. So अगर आप अंदर अपने डॉक्टर नहीं बिठाते, आपके पास खुद ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, the applicant has just a collaboration with the diagnostic company, the person will not be covered under the definition of healthcare services and exemption will not be available. So this is the case of advanced ruling of JC Genetics India Private Limited, right? Moving ahead, sir, although I do not believe so much in the advanced rulings, especially at the times when you are seeing that the advanced rulings are mostly coming somewhere for the not for the enhancement but in an adverse way to the assessees. So but there are certain things which just gives us the insight that how the government perceives a particular entry. So those advanced rulings I have reproduced here, which gives us the concept clarity, right? Now moving ahead, this I have already discussed. Medicines की सप्लाई बाहर वालों को करोगे टैक्सेबल, इन पेशेंट को करेंगे जो ड्यूरिंग द ऑपरेशन, सर्जरी, ट्रीटमेंट के टाइम पे होती है, देन इट विल रिमेन एग्जेम्प्ट. डायग्नोस्टिक सेंटर स्पेसिफिकली मेडिविजन की एएआर है, एग्जेम्प्ट है, हमने डील बिफोर भी किया था. अदर देन दिस, अगर आप किसी भी तरह की प्री और पोस्ट काउंसलिंग देते हैं, देन इट विल बी एग्जेम्प्ट. सर, कोलंबिया एशिया की जजमेंट आई थी and you can, I hope you can imagine कि इसने सब कुछ हिला दिया, because it बाकी कॉन्सेप्ट्स तो इसने नॉर्मली डेल्ट फॉर किए कि कॉम्पोजिट सप्लाई मानी जाएगी जो पेशेंट्स को दी जाती है, नेचुरली बंडल्ड है, उनका खाना पीना रहना रेंट एवरीथिंग इज एग्जेम्प्ट. बट दिस जजमेंट ऑफ कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल्स के केस में, बिकॉज मल्टीपल यूनिट्स थे, इट ब्रॉट इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस चार्ज, one to another, one branch to another, the cross charge should be there. So the Columbia Asia judgment introduced the concept of cross charge for the corporate units of the hospital. एक हॉस्पिटल अगर दूसरे, यानी एमडी मेरा कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठा है, उसकी सैलरी का प्रोपोर्शनेट मुझे दूसरों से भी रिकवर करना है, बिकॉज एमडी इज डूइंग द वर्क ऑफ एंटायर कॉर्पोरेट सेक्टर. So the cross charge concept was brought in by the Columbia Asia judgment, although I'm not that convinced, but not going into the litigative aspect of the AAR. But I've just reproduced here because it was related to the hospital. Sir, आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा था issue that the hand sanitizers are where to be covered, 18% और 12%. So ऐसे ही Odomos का भी झगड़ा था, डाबर इंडिया का केस था, AAR है, that it has been held at taxable at 18% under the HSN 3808, जिसमें आज हमारे हैंड सैनिटाइजर्स भी गवर्नमेंट ने टैक्स फॉर किए हैं, बिकॉज इट वाज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, इट इज easily available, so they held it to be taxable at the rate of 18%. Now, so these are certain case laws, कुछ इसमें मैंने VAT regime के डाले हैं, but I am not right now discussing it. Simply saying that if you are providing any services to the inpatients, those all will get exempt, right? With this, my healthcare sector is over.
Sir, I request you to please that if I can take the queries at the end so that we cover up the topic hurriedly first, and then I will be here for taking all your queries. Right? Queries will be taken up at the end only. Don't. Yes, sir. Thank you so much. And all Now, can put up on the chat because no personal questions will be allowed at there. Now, next question is educational institutes. So now we are on to the next sector, educational. Sir, same section है. Levy create हुई. Yes. Levy create की section 9 ने. Very well. Rate prescribe हुआ. उसमें SAC क्या था? 9993. Here the SAC is 9992 at the rate of 18%. Then came the exemption. The entry was entry number 74 there and 66 here. So educational sector is also exempt, right? Educational sector is also exempt. So but हम इसमें देखेंगे educational sector में कुछ incomings भी exempt है और कुछ outgoings भी exempt है. Now let's see. सबसे पहले definition. What is an educational institute? Sir, जब हम educational institute सोचते हैं ना, so seriously इतने सारे क्वेश्चन मेरे माइंड में तो आते थे which I clarified and hope so कि शायद आपके भी आते हो. प्ले स्कूल्स टैक्सेबल हैं, मेरी एफिलिएशन नहीं है, मुझे बेनिफिट मिलेगा, मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मुझे बेनिफिट मिलेगा, यूनिवर्सिटी को पेमेंट कर रहा हूँ, बेनिफिट मिलेगा, बुक्स की यूनिफॉर्म्स की सेल कर रहे हैं. व्हाट अबाउट द हॉस्टल्स, व्हाट अबाउट द फॉरेन डिग्री कोर्सेज, what about our ICAI or the IIMs or IITs, whether those are exempt? What about the school canteens? What about the IELTS center? So we will be finding answers to all these questions today in the webinar itself, right? So please be with me. Now, first of all, what we will be discussing is the definition of the educational institute, which is given in the notification itself. The definition is 2Y clause. What it says. सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की डेफिनेशन को ध्यान से देखेंगे. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की डेफिनेशन में उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. 3 पार्ट्स. सिंपली से अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं, 1 is schools, another are colleges, and third are industrial training institute जहां पे हाथ कला, हस्तकला, मतलब कुछ हुनर सिखाए जाते हैं. थर्ड इज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मे बी मोबाइल रिपेयर्स, मे बी स्टिचिंग एटसेट्रा, ऑल दोस वोकेशनल कोर्सेज, राइट? So broadly these are classified into 3 categories. Now we will see how it comes in case of educational institutes. What is the language? Preschool education and education up to higher secondary or equivalent, यानी हायर सेकेंडरी तक की एजुकेशन, उसमें प्री स्कूल एजुकेशन भी कवर्ड है, राइट? सेकेंड, एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम टू ऑब्टेन अ डिग्री, लाइक एडवोकेट डिग्री, LLB degree, like CA degree. So all these are institutes are covered under this category, qualification recognized by law. Third, we have approved vocational educational institutes. Sir, इसकी definition दी गई है itself in the notification. So if I ask you a few questions and if I can see it in the chat box, the quick answers related to it is first, whether the international schools will be covered. Whether just a yes or no, please. Whether the international schools will be covered. Yes, international schools will be covered for the exemption because the word written are equivalent. Sir, entry number 1 में कहीं नहीं लिखा recognized by law in India. So preschool education, including the play schools, including the international schools, those all are covered. Coming towards the next issue is whether the foreign degrees are covered. International schools cover kiye. What about the foreign degrees? No, sir. The foreign degrees are not covered because the word written there is qualification recognized by law. So if your institute is dealing in the foreign qualifications, that will not be covered here. Sir, law in India kya hai is a big question because what is law in India? Recognized by any law? Nowhere it is defined. But there is an old circular of 107 by 2009 which says the institutes which are recognized by UGC, AICTC, and such which came through Union Act like the CA Act. So all those will be covered for and considered as recognized by law in India.
एंड सर रिकॉग्नाइज्ड, इसमें उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग का केस लॉ भी डिस्कस किया, व्हिच हैज said that recognized by law is a wider term. So here I give you a food for thought. My institute, my client is dealing in a foreign university degrees, but he also get equivalent degree in India also. यानी अगर वो फॉरेन डिग्री देता है, लेकिन अगर आपको इंडिया में कोई जॉब चाहिए या कोई आपको कुछ भी चाहिए, तो गवर्नमेंट एजेंसी है वो आपको इक्विवेलेंट डिग्री दे देती है. So will he be qualifying as an educational institute or not? So it's a food for thought. We'll be taking at the end of this. Now, moving ahead. What about the private coaching institutes? No, sir. If you have read, ना तो वो कोई हायर एजुकेशन स्कूल की दे रहे हैं, ना वो कोई recognized law की डिग्री देते हैं. So they are not covered by educational institute. A question arose. A coaching institute, अभी थोड़ी देर पहले एक masterminds की AAR भी आई थी, and various other case laws are there, various other judgments are there, AARs are there, which talked about that मैं coaching institute हूँ, मैं कोर्स वही कराता हूँ जिससे एसएससी को डिग्री मिलती है. So वो डिग्री recognized by law है. For example, CA aspirants को I am teaching, or law aspirants को I am teaching. So will it be qualifying? No, not at all, because you are not providing the degree yourself. What you are doing, you are just a mediator. There are those aspirants also who work, who can get the degree without the coachings also. So as a result, the private coaching institutes do not qualify for exemption. So answer to question number 1, we have got the private institutes are not covered. IELTS institutes are not covered because no degrees are provided by them. Preschools, only preschools, yes, they are covered, but they must provide certain education. 2 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे, which are admitted in preschools and getting the education, are covered by the exemption. Whereas if you are just providing the daycare service, sir, daycare service is covered in a different sack. Preschool are covered in a different sack. Daycare services are taxable. Daycare services are taxable at the rate of 18%. So if you are a preschool, you are exempt, but if you are a daycare, you are not exempt. अभी हम देखेंगे daycare, अगर school ही अपने बच्चों को देगा, day boardings, so then it will become exempt, but only daycare services are not exempt. सर एक हमने पार्ट किया था approved vocational education, मैंने आपको बोला था वो नोटिफिकेशन में itself डिफाइंड है 2H में, and it talks about कि vocational institute वो हैं जो नेशनल काउंसिल साथ रजिस्टर्ड हैं, मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्सेज है नेशनल काउंसिल के, एंड डेजिग्नेटेड ट्रेड्स होने चाहिए. अगर उसमें मोबाइल्स लिखा है तो मोबाइल्स ही होना चाहिए. सो देयर मस्ट बी डेजिग्नेटेड ट्रेड्स. अगर आप उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं, yes, you are exempt. Now, very very important, the notification. सर अभी तक हमने जो किया वो डेफिनेशन थी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की. एजुकेशन वर्ड is not defined in the GST law, right? What is the exemption entry? Entry number 66. So this is the entry number 66, which is the base entry. और अगर आपने ये समझ ली, the education is become just a 1-minute task. सर A part डील करता है बाय को. बाय मतलब जो सर्विसेज हम दे रहे हैं, आउटपुट सर्विसेज ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. एंड 2 पार्ट डील करता है इनकमिंग्स को. सर हॉस्पिटल से थोड़ा डिफरेंट सेक्टर है, हॉस्पिटल में इनपुट ज्यादा एग्जाम नहीं थे, whereas in case of this educational sector the inputs have also made exempt, especially for the schools. Especially for the schools, वो 3 limbs आपको याद होंगे, schools, colleges and the vocational training institute. अभी हम उन्हीं को डील करेंगे. So सर A का AA क्यों बनाया? I tell you, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो सर्विसेज प्रोवाइडेड करे स्टूडेंट्स को, स्टाफ को, फैकल्टी को 100% एग्जाम. एनी सर्विस, कुछ भी, डे केयर, खाना पीना, कुछ भी, हॉस्टल, व्हाटएवर इज एग्जेम्प्ट. लेकिन एंट्रेंस एग्जामिनेशन जब कंडक्ट कराते हैं तो वो पर्सन मेरा स्टूडेंट नहीं होता. वो स्टूडेंट बनेगा या नहीं बनेगा वो डिपेंड करता है. सो दैट इज व्हाई उन्होंने ए का एक पोर्शन सेपरेट करके AA बनाया. एंड दे सेड दैट कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन is also an exempt services if provided by an educational institute. Other than this,
Incoming is also free. The input services are also tax free. But let's have a look on entry number 66 in the following slide. This I have reproduced here. A and AA. सर AA और AA किसके साथ डील करती थी? आउटगोइंग के साथ. प्रोवाइडर कौन होना चाहिए? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. अभी अभी हमने डेफिनेशन की. क्या प्रोवाइड करे? सर्विस. कौन सी? कोई भी प्रोवाइड करे. एनी सर्विस. किसको? स्टूडेंट, स्टाफ और फैकल्टी को 100% टैक्स फ्री, 100% एग्जेम्प्ट. कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन करा रहा है और एंट्रेंस फी चार्ज कर रहा है. वर्ड हियर इज एनी पर्सन. स्टूडेंट नहीं लिख सकते से सर, क्योंकि पर्सन कैन और कैन नॉट बिकम अ स्टूडेंट. सो एज अ रिजल्ट उन्होंने कहा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, अगर तुम कोई एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए कोई एंट्रेंस फीस भी चार्ज करोगे, दैट इज एग्जेम्प्ट. राइट. Now a question yesterday was posted to me. University charging college as a fee. Sir, the college is that is the input service of the college, and university is not providing services to student, faculty or staff. It is providing services to college. Affiliation fee, that will 100% be taxed at the rate of 18%. Right? So एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तुम अगर कोई भी सर्विस देते हो तो तुम्हारी सर्विसेज, इन तीनों को तुम जो भी सर्विस दोगे वो एग्जैक्टली एग्जेम्प्ट है. नाउ द बी क्लॉज डेल्ट विद द इनपुट सर्विस. द बी क्लॉज डेल्ट विद द इनपुट सर्विस. क्या सर इनपुट सर्विस के लिए ना आपको एजुकेशन में हमने 3 पोर्शन किए थे, स्कूल, कॉलेजेस और वोकेशनल. सो इनपुट की एग्जेम्पशन सबको नहीं है. इनपुट की एग्जेम्पशन सबको नहीं है. इनपुट की एग्जेम्पशन ज्यादा स्कूल्स को है. सो दैट इज व्हाई प्रोवाइडर कौन? एनी पर्सन, कोई भी पर्सन ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दे, केटरिंग की फैसिलिटी दे, सिक्योरिटी या क्लीनिंग और हाउसकीपिंग की सर्विस दे. यानी इनपुट्स किसको आ रहे हैं? रिसिपिएंट कौन होना चाहिए? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. लेकिन तीनों नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्कूल वाला, यानी 2/1. अगर आप एक स्कूल हैं और आप ये तीनों इनपुट सर्विसेज ले रहे हैं, तीनों मतलब 1 2 3 4 5 सर्विसेज ले रहे हैं, then that service will be exempt service. But this is not exempt to colleges. यानी अगर सिक्योरिटी कॉलेज ने रखी हुई है तो that service is not, input service is not free for them. Canteen run by school is tax free, but the canteen run by college is not tax free. So in this जो canteen की input service की बात कर रही हूं मैं, what I'm saying, canteen की सर्विस. सर अगर कैंटीन स्कूल में बच्चों के लिए है या कॉलेज में स्टूडेंट, स्टाफ और फैकल्टी के लिए, और वो कैंटीन स्कूल ही या कॉलेज ही रन करता है, फिर तो वो बाय में आ गया. सिंपली सेइंग, अगर आपको इन 5 में से कोई भी इनपुट सर्विस आती है और आप एक स्कूल कैटेगरी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो आप एग्जेम्प्ट हैं. आपको टैक्स नहीं लगेगा इनपुट पर भी. और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितनी सर्विसेज हैं, एग्जांपल लेती हूँ, क्वेश्चन पेपर सेटिंग, प्रिंटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, OMR शीट प्रिंटिंग, OMR शीट checking of the examination papers etc, admission to और conduct of examination की related जो भी input services है किसी भी तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, 1 2 3, may it be school, college, vocational, all are exempt. All are exempt. Right? Now third, ऑनलाइन जर्नल और पब्लिकेशन. सर ये हमारे वाले पार्ट को एग्जेम्प्ट है. यानी सेकेंड, अगर आप एक कोई क्यूरिकुलम का पार्ट करके क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ लेते हैं और ऑनलाइन जर्नल्स और एजुकेशंस की आप कोई इनपुट सर्विस ले रहे हैं, प्रिंटिंग करा रहे हैं, और आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है कैटेगरी 2 का, तो आप एग्जेम्प्ट हैं. तो आप एग्जेम्प्ट हैं. राइट? सो दिस पार्ट डेल्ट विद द आउटपुट and this part dealt with the input services. But input services में हमें देखना पड़ेगा 1 2 और 3 कैटेगरी के. सर मैं केटरिंग का क्लियर कर दूं बिकॉज बहुत ज्यादा क्वेरी यहाँ पे लोगों को आती है. अगर तो कैंटीन खुद स्कूल कॉलेज चलाता है और स्टूडेंट्स, फैकल्टी और स्टाफ को बेच रहा है, एग्जेम्प्ट. बाहर का कोई आउटसाइड कैटरर है और वो वहां पे कैंटीन रन करता है, इट इज नॉट एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट.
वो प्रोवाइडर अगर वो स्कूल कैटेगरी है तब तो एग्जाम्प्ट हो गया, बिकॉज वो केटरिंग की सर्विस दे रहा है स्कूल को। लेकिन अगर वो कॉलेज में केटरिंग की सर्विस दे रहा है तो वो टैक्सेबल है, और टैक्स रेट है 5% ऑन द केटरिंग। राइट, आई होप आई एम क्लियर विद द फूड कॉन्सेप्ट। नाउ मूविंग अहेड सर, यहाँ पे वो जो ये आपके सामने द सर्कुलर विच आई हैव प्रोड्यूस्ड हियर इज सर्कुलर नंबर 55. This circular number 55 dealt with ITIs, Industrial Training Institute. Sir, because it was a bulky circular, I have just reproduced in a diagrammatic way. Sir, ITIs, Industrial Training Institute, दो तरह के हो सकते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट रन। अगर तो आपका गवर्नमेंट ITI है और इंडिविजुअल्स और स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देता है, सीरियल नंबर 6 में एग्जेम्प्ट है। अगर आप एक प्राइवेट ITI हैं और आप वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं और वो डेजिग्नेटेड ट्रेड में है, यू आर एग्जेम्प्ट। बट अगर आप अदर देन डेजिग्नेटेड देते हैं, यानी मैं ऐसा कोई काम सिखा रही हूँ विच इज नॉट कवर्ड अंडर द डेजिग्नेटेड ट्रेड्स, देन इट इज टैक्सेबल। सिमिलर वे, अगर आप कोई कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन के रिलेटेड भी डेजिग्नेटेड ट्रेड में कराते हैं, एग्जाम, और अगर आप नॉन डेजिग्नेटेड ट्रेड में कराते हैं तो टैक्सेबल। सो देखना पड़ेगा ITI अप्रूव्ड होना चाहिए और ट्रेड डेजिग्नेटेड होना चाहिए। Provided by services provided by ITI are exempt. For private, for government, it is specifically exempt under serial number 6. Now I come to the question of IIMs. सर, पहले ना IIMs की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की सेपरेट एंट्री हुआ करती थी, एंट्री नंबर 67, बिकॉज इनको इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस माना जाता था और ये नॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में नहीं आते थे। बट गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 2019 ऑनवर्ड्स इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में क्लब कर दिया। सो एज ऑफ नाउ से देयर इज IIMs आर आल्सो कवर्ड बाय 2Y2, जिसमें हमारा ICAI कवर्ड है। So that's the way Indian Institute of Management is now also the part of Educational Institute. Sir, इसके कुछ दो तरह के कोर्सेज होते हैं, 2 years फुल डिग्री कोर्स और कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज होते हैं। So जो एग्जेम्पशन है GST की, वो पर्टिकुलरली 1 year कोर्सेज के लिए नहीं है, 2 years जो फुल कोर्सेज है सिर्फ उनके लिए। आई एम नॉट टेकिंग अप IIMs that in detail. If anybody has any query on it, they can ask for. सर, अदर देन जो हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, अगर वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और इन सब के प्रोग्राम्स के अंडर रजिस्टर्ड है तो उनके लिए स्पेसिफिक एंट्री है। और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की एंट्री नंबर 71 है, एंड देयर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स आर एब्सोल्युटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST। सो ये तो बात थी हमारी एंट्रीज की। सर, एंट्री नंबर 22 ऑफ नोटिफिकेशन में आप देखेंगे हम एक लिंब और पीछे जाएंगे। एग्जाम्पल, आई एम एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मेरा एक स्कूल है। मैंने कहा स्कूल, अगर तुम्हें कोई ट्रांसपोर्टेशन सर्विस मिलती है, यानी स्कूल बस तुम किसी से ले रहे हो, तो तुम्हारी इनकमिंग भी फ्री थी, एग्जेम्प्ट थी। अभी हमने डिस्कस किया था, ये देखिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स की इनपुट सर्विस भी फ्री थी स्कूल्स के लिए, सिर्फ स्कूल्स के लिए। सो अब उन्होंने क्या कहा, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये बीच में बैठे हैं, ये एक कार, एक जो व्हीकल है, मोटर व्हीकल है, वो रेंट पे लेते हैं, और ये मिस्टर एक्स आगे स्कूल को उसको स्कूल बस के लिए आगे देते हैं। सो इवन ये जो मिस्टर एक्स बीच में बैठे हैं, who has taken the motor vehicle on rent, even the service of taking of rent of motor vehicle by him, which is to be used as a school bus, is also exempt. So entry number 22 एक स्टेप और पीछे चली गई एग्जेम्पशन देने के लिए, और इसने कहा कोई भी पर्सन, प्रोवाइडर कैन बी एनी पर्सन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, किसको, कौन सी सर्विस, मोटर व्हीकल की हायरिंग की, किसके लिए, जो कि यूज होनी है स्टूडेंट, स्टाफ और फैकल्टी की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सर्विस रिसिपिएंट कौन है, एनी पर्सन है, लेकिन वो इसको कैसे चलाने वाला है, वो इसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को दे रहा है जो कि स्कूल है। सो आप इसकी भी, जो इसको भी मोटर व्हीकल मिलेगा, उसके रेंट जो इसकी इनपुट सर्विस होगी, that will also be tax free. Service by way of giving on hire a motor vehicle
for transportation of students is also exempt. So one limb back. Sir, जो पर्सन ने स्कूल को देनी थी वो तो ऑलरेडी 66 में एग्जाम थी. सो एंट्री नंबर 22 में वो उस पर्सन के लिए भी एग्जेम्प्ट कर रहे हैं जिसने वो मोटर व्हीकल हायर पे लिया है. So with this, the main entries of exemption notification related to education are covered. Let's see a few more points on it. Sir, hostel facilities already told. कोई भी जो लॉजिंग बोर्डिंग फैसिलिटी खुद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट देता है अपने स्टूडेंट्स को, yes, it is exempt. Yes, it is exempt. So educational institute providing lodging boarding services to its student is 100% exempt. Other than that, sir, maritime I'm not dealing with. Sir, एक चीज याद रखिएगा, अभी हमने चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स भी डिस्कस करना है. So उस केस में भी I will tell you, पूरी एंटिटी जीएसटी में कभी एग्जेम्प्ट नहीं होती. इट इज नॉट लाइक मेरे पास 12AA मैं एग्जाम टू जी मैं तो जीएसटी से ही बाहर हूं. नो, नॉट एट ऑल. सर, इसमें भी एक्टिविटी वाइज टैक्स लगता है. जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल ली, ये एबीसी इंस्टीट्यूट है, ये बहुत सारे काम कर रहा है. कोई उसके एग्जेम्प्ट है और कई उसके टैक्सेबल भी हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर इसने हॉस्टल की फीस चार्ज की, कोई वोकेशनल कोर्स कराया, एग्जाम, लेकिन इसने कमर्शियल कोचिंग सेंटर भी एक सेपरेट विंग चलाया हुआ है, इसकी एक ब्रांच है विजार्ड नाम की, वेयर इज प्रोवाइडिंग कमर्शियल कोचिंग. आई एम नॉट गोइंग इनटू द इंट्रिकेसीज वेदर दे कैन रन और नॉट, but if it is as a separate branch for GST purpose, that service will be a taxable service. So ultimately saying the entire institute never gets exempt, may it be your charitable, may it be your religious, may it be your educational, may it be your healthcare. So you have to check it activity wise, right? Moving ahead, sir, यहाँ पे कुछ rates है education service के which you can refer for. Now, sir, registration में ध्यान रखिएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की अगर आपने थ्रेशोल्ड चेक करनी है रजिस्ट्रेशन की, तो उसकी सर्विस ऑफ एग्जेम्प्ट सर्विस भी ऐड होगी टू कैलकुलेट द एग्रीगेट टर्नओवर एज पर 2(6). सो अगर इनको कोई स्कूल है, फॉर एग्जांपल प्रोप्राइटरशिप में चल रहा है, उसको कोई रेंटल इनकम भी आ रही है जो टैक्सेबल है, सो आपको रेंटल इनकम प्लस एग्जेम्प्ट इनकम जोड़ के थ्रेशोल्ड चेक करनी है फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन. नाउ moving ahead to the place of supply. Sir, what about the place of supply? 12(6) के provisions लगते हैं place of supply पे, location of the educational institutes. और आजकल जमाना है online coaching का, so online coaching according to me will be covered under 12(2) so that IGST can be charged location of recipient के according and the सामने वाला person can get the benefit of it. Now, what are the issues that arises? Sir, sometimes I have reproduced here a few ARs. We'll be taking it in a quick format. But सबसे important जो question arise होता है, foreign university से commission आ रही है. ये हमारे Mr. X हैं. Mr. X क्या करते हैं? Foreign university के courses यहाँ promote करते हैं, and he make the prospective students for them. Then in that case, इनको जो commission आ रही है, it is held as it is not export of services because he is an intermediary. Because he is an intermediary, he qualifies to be intermediary under 12(3) and 213, and his place of supply is according to 13(8). और place of supply बन गई India, because India बन गई, export of services नहीं माना जाएगा. Now when it is not export of services, so he will be taxable. और सर सबसे ज्यादा जो इसमें issue arise होता है, टैक्स कौन सा लगेगा, C और S और I? सर, it is C and S. Place of supplier and place of supply, the location of the supplier and place of supply is in same state. So, and hence C and S will be charged. Although there is an advance ruling also which says I should be charged, covering it in under the residual clause of section 7. But it is not so. Because it is place of supply and the supplier is at the location of supplier is at same place, C and S should be charged. Sir, अगर मैं उस advance ruling को मान लगूं तो मेरा पूरा section 13 ही residual clause में चला जाएगा और I charge होगा. No, not at all. Because the place of supply becomes India, export benefits are not available, C and S will be charged. इसमें क्या था सर, ये हमारा स्कूल है, इसने दूसरे स्कूल्स को गैदर किया और कॉन्फ्रेंस कराई और इसको बाहर से इनकम आई. It is not providing services to its students.
It is providing services to other schools. As a result, it was held that it is taxable, not covered by exemption. सर ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट कराने का आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इसमें इशू क्या हुआ था. आई जस्ट कम टू वन इशू फर्स्ट. इसमें से फूड वगैरह की जो भी एग्जांपल्स है मैंने ले लिए हैं. एक एग्जांपल जो आई वुड लाइक टू डिस्कस हियर इज, इफ आई एम प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज फॉरेन यूनिवर्सिटी कोर्सेज, आई विल नॉट बी एलिजिबल. सर इसमें जो सबसे ज्यादा जो इशू अराइज होता है दैट इज अबाउट द टैक्सेबिलिटी ऑफ गुड्स. स्कूल यूनिफॉर्म बेच रहा है, टैक्सेबल. सर गुड्स की तो कोई एग्जेम्पशन ही नहीं है, द एग्जेम्पशन इज ओनली फॉर सर्विसेज. स्टेशनरी सेल कर रहा है, टैक्सेबल. प्रिंटेड बुक, सर प्रिंटेड बुक सबके लिए एग्जेम्प्ट है, एंड सो डू इट इज एग्जेम्प्ट. देयर इज नो स्पेसिफिक एंट्री फॉर द प्रिंटेड बुक्स. व्हाट अबाउट द ओएमआर शीट्स? सर इट वाज हेल्ड कि जो क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग कराए वो एक गुड्स है, जो गुड्स मटेरियल के साथ जा रहे हैं. But it was held in the AR. I have given the AR also in the presentation itself. It is not good. Sir, question papers are not marketable. Sell nahi hote question papers. It is a service. Now when it is a service, school ने annual function arrange किया, student से fees charge की, 100% exempt. But parents की entry fees रखी, taxable. You are not providing services to the students, you are providing to your parents, to their parents, it is taxable. Question paper से related कोई भी service, OMR, conduct of examination, exempt. Security, housekeeping, exempt है सिर्फ 2YI वालों को. मैन पावर की सर्विस का इनपुट exempt है, इनकमिंग exempt है only to 2YI. Sir, let me tell you, housekeeping, security और cleaning exempt है, but the manpower service is not. यानी अगर आप कोई recruitment की services ले रहे हैं, manpower supply की ले रहे हैं, that will become taxable. Day care service, अगर आप अपने students को देते हो, exempt. Day care services, अगर आप किसी normal day care center है, तो it is taxable. Hostel exempt, canteen exempt. But for students and run by the educational. अगर कोई outsider होगा तो taxable at the rate of 5%. Now, with this we end up with the educational, जिसमें मैंने एक यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल भी आपके साथ डिस्कस किया. Now coming towards the last is charitable institutes. Sir, charitable institute पूरा exempt कभी नहीं होता है. The entry number 1, the very first entry of notification 12 by 2017 deals with the charitable institution. And sir, charitable की definition GST में अपनी दी गई है. This is the definition of charitable and it is a very narrow definition. Yoga, spirituality, religion covered है, wild forest, life covered है. But अगर आप देखेंगे जो हेल्थ है, जो मेडिकल फैसिलिटीज है, वो सिर्फ वही कवर्ड है. केयर एंड काउंसलिंग ऑफ व्हाट? इल पर्सन्स who are suffering for mental disability, HIV, AIDS, and narcotics, drugs, etc., alcohol. Public awareness covered है regarding preventive health. But अगर आप इस definition को income tax से compare करेंगे, this is a very, very narrow definition given. सर इनकम टैक्स की डेफिनेशन में तो गुड्स की सेल, पब्लिक यूटिलिटी के लिए अगर आप एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ पब्लिक यूटिलिटी करते हो, 20% तक के प्रोसीड्स भी एग्जेम्प्ट है. इट इज नॉट सो इन चैरिटेबल. सर चैरिटेबल में हेल्थ केयर नॉर्मली एग्जेम्प्ट है जीएसटी में, एजुकेशन नॉर्मली एग्जेम्प्ट है. बट इफ यू आर 12, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, मैं कोई हॉस्पिटल नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक संस्था हूँ, एक इंस्टीट्यूट हूँ जहाँ डॉक्टर्स भी नहीं है, हम सिर्फ सेवा करते हैं लोगों की, पुअर that. और बट वो एंटिटी 12AA में रजिस्टर्ड है, सो वो यहाँ पे बेनिफिट ले सकती है क्योंकि वो हेल्थ केयर को क्वालिफाई नहीं करती है. वहां कोई पैरामेडिक्स नहीं है, वहां नॉर्मल पर्सन जाके सेवा कर रहे हैं, सो दैट विल. बट वो एंटिटी 12AA में रजिस्टर्ड है तो उसकी चैरिटेबल एक्टिविटीज से रिलेटेड सर्विसेज मानी जाएंगी और वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगी, प्रोवाइडेड वो केयर और काउंसलिंग करती हैं या प्रिवेंटिव हेल्थ केयर करती हैं, फैमिली प्लानिंग या उनके लिए अवेयरनेस क्रिएट करती हैं, रिलीजन या योगा स्पिरिचुअलिटी की एडवांसमेंट करती हैं और एजुकेशनल प्रोग्राम चलाती हैं. वो भी किन के लिए? होमलेस चिल्ड्रन, प्रिजनर्स,
मेंटली डिस्टर्ब्ड पर्सन या 65 ईयर्स से ऊपर के जो लोग रूरल एरियाज में रहते हैं उनके लिए the definition of charitable activities is very restricted in case of the GST. So अगर आप 12AA में रजिस्टर्ड एंटिटी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप GST से भी जरूर एग्जेम्प्ट होंगे. मुझे चेक करना पड़ेगा क्या आप चैरिटेबल एक्टिविटी की डेफिनेशन एज पर GST क्वालिफाई करते हैं. अगर आप करते हैं तो आप जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इट विल बिकम एग्जेम्प्ट सर्विसेज. सर योगा कैंप्स लगाना, यस इट इज एग्जेम्प्ट, बट मेक श्योर फिटनेस कैंप्स, एरोबिक क्लासेस, डांस क्लासेस आर नॉट एग्जेम्प्ट, राइट. सो इसी तरह से अगर आप कोई गुड्स सप्लाई करते हैं you are not exempt. The goods are taxable. Now sir, what about the donations, which is one of the most important part? Sir, what is a donation and why it is not a supply? Because इसमें furtherance of business नहीं होता. So गवर्नमेंट ने भी इसको क्लैरिफाई किया. अगर मैंने कोई मंदिर को डोनेशन दी, उन्होंने मेरे नाम का बोर्ड लगा दिया, सो एंड सो पर्सन ने मिस्टर एक्स की याद में ये काम कराया, इट इज अ डोनेशन. उन्होंने अपने ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए बोर्ड लगाया, एग्जेम्प्ट. फिलेंथ्रोपिक पर्पस, एग्जेम्प्ट. कोई पब्लिसिटी नहीं, जस्ट नॉर्मल. बट अगर मैंने कहा मिस्टर अंबानी आते हैं, वो बोलते हैं मैंने ये काम कराया, मेरा वहां पे ना इतना 2x4 का या 6x8 का बोर्ड लगना ही चाहिए और उसके ऊपर नाम आना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऑनर ने ये काम कराया, दिस इज नॉट अ डोनेशन. You are getting something in consideration, business involvement, and it will become a taxable activity. So if you are demanding something in return, it is not exempt. But if it is just a philanthropic purpose, no commercial gains, then the donation is out of the purview of GST, not taxable, right? Sponsorship services are taxable, Now, ओल्ड एज होम्स एग्जेम्प्ट. स्पेसिफिक एंट्री वहां लिमिट है 25,000 रुपए तक की होनी चाहिए. ओल्ड एज होम्स एग्जेम्प्ट है. कोई कोचिंग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज एग्जेम्प्ट है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लास्ट एंट्री ऑफ चैरिटेबल व्हिच आई विल बी डिस्कसिंग टुडे, रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट कराने की. ये देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमारे पंडित भाई साहब है. आजकल सर सब कुछ ऑनलाइन होता है, पूजा भी ऑनलाइन ही होती है. पंडित जी आए, ऑनलाइन पूजा करा रहे हैं, सर इनकी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है. बट एक मीडिएटर था जो कि पंडित अरेंज करता था, सो दे हेल्ड दैट द एंट्री नंबर 13 इज फॉर कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी. पंडित जी की जो है वो सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, लेकिन जो मीडिएटर है इज अ इंटरमीडिएरी, इज अ कमीशन एजेंट, उसको हम इसमें कवर नहीं करेंगे. सो द मीडिएटर वाज टैक्सेबल. सो अगर आपकी कोई भी कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी को लेकर कोई भी ट्रांजैक्शन है वो एग्जेम्प्ट है. नाउ व्हाट अबाउट रेंटिंग? सर सबसे ज्यादा ये पॉइंट यहाँ मिस होता है. आई टेल यू वन एग्जांपल. आई हैव अ क्लाइंट हु इज अ रिलीजियस इंस्टीट्यूट. वो मंदिर है, राइट? मंदिर है तो इट इज जनरली अज्यूम्ड एग्जेम्प्ट है. डोनेशन आती है, वो डोनेशन बॉक्स लगा है, उसमें पैसे गिर जाते हैं. बट द इश्यू इज उसके बाहर शॉप्स हैं, शॉप्स उन्होंने रेंट पे दी हुई हैं. सर तो आपको चेक करना पड़ेगा उनकी रेंटल इनकम क्या लिमिट से एक्सीड करती है. सो अगर मैं ऐसे बोलूं, कोई भी पर्सन अगर कोई रिलीजियस सेरेमनी पूजा वगैरह कंडक्ट कराता है एग्जेम्प्ट. लेकिन अगर आप एक 12AA के इंस्टीट्यूट हो या 1023C के हो इनकम टैक्स के, या 1023 BBA के हो, और आप किसी को सर्विस दे रहे हो रेंटिंग की और वो मॉनेटरी लिमिट से एक्सीड करेगी तो वो टैक्सेबल है. मॉनेटरी लिमिट प्लस 20 लाख का थ्रेशोल्ड, दोनों अगर मैं ऐड कर दूं तो वो टैक्सेबल है. व्हाट आर द मॉनेटरी लिमिट्स? सर अगर आपके रूम्स प्रेसिडेंट्स ऑफ रिलीजियस प्लेस में है, साथ ही है, ये नहीं मेरा यहाँ पे मंदिर और मेरे कमरे कहीं और है, धर्मशाला कोई और है, नो नॉट एट ऑल. सर वो अगर नॉर्मल कवर करना है, कोई होटल इन गेस्ट हाउस, वो एंट्री नंबर 14 में कवर्ड है. नॉर्मल भी, होटल के लिए भी 1000 रुपए तक का कमरा फ्री है. बट अगर आप इस एंट्री में कवर करना चाहते हो तो ये प्रेसिडेंट्स ऑफ रिलीजियस प्लेस में होना चाहिए. रेंटिंग ऑफ रूम 1000 पर डे. मैरिज हॉल्स 10,000 per day, जहां पे chauthas and all the certain ceremonies are being performed. So may it be any religion, Hindu, Muslim, Sikh, Isai, any religion. So up to 10,000 rupees. और अगर आप शॉप्स की रेंटिंग करते हो दैट ऑल्सो 10,000 रुपीज पर मंथ की एग्जेम्पशन लिमिट है. अगर आपको इससे ऊपर रेंटल आते हैं
that will become taxable. So like we talked about educational institution, charitable institution भी अगर कुछ goods बेचते हैं, so they are taxable. If they are selling any goods, they are taxable. Public libraries are specifically exempt है entry number 50 में, इसलिए वो exempt है. अगर कोई रेंटल या सीए सर्विसेज लेता है चैरिटेबल, यानी मैं ऑडिट करती हूँ किसी रिलीजियस का, तो मैं तो जीएसटी लगा कर ही दूंगी, टैक्सेबल. गणेश चतुर्थी का फंक्शन हुआ, होर्डिंग्स लगी, नाउ व्हेन होर्डिंग्स आर देयर, इट इज एडवर्टाइजमेंट इनकम, इट इज टैक्सेबल. इट इज एडवर्टाइजमेंट इनकम, इट इज टैक्सेबल. यस, एक एग्जेम्पशन है, अगर आप सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं, import of services by charitable institution, RCM नहीं लगेगा. Sir, what I have tried to do, I have tried to cover all the entries related to charitable wherever it is for the ease of reference. So अगर आप कोई भी import of service करते हैं charitable purpose के लिए, the purpose should be charitable by a charitable institute, it is no RCM will be charged. It is specifically exempt by entry number 10 of notification 9/17. ये हमने already discuss कर लिए हैं. So with this, our charitable is also over. And एक छोटा सा brief आपको दूंगी before coming up to your queries. Sir, ITC क्या करें उन खर्चों का? इंश्योरेंस कराई एम्प्लॉइज की, सैनिटाइजेशन की ऑफिसेज की, व्हाट अबाउट दो? सर, सेक्शन 16 और 17 दो ऐसे सेक्शन है जो मेरे आईटीसी की एलिजिबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं. दो ऐसे हैं जो मेरी आईटीसी की एलिजिबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं. सेक्शन 16 एंड सेक्शन 17 बताएंगे कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा. और सर, एम्प्लॉइज के लिए किया हुआ खर्चा इज कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. Caltech Polymers, Bombay High Court in Coca-Cola Private Limited, they all have held that these are the course or furtherance of business, यानी आपको ये खर्चे मिलेंगे. लेकिन if I come to the medical insurance, सर, एम्प्लॉइज की मेडिकल इंश्योरेंस कभी भी अलाउड नहीं थी, ना मैंडेटरी है, ना अलाउड है सेक्शन 17(5) के अकॉर्डिंग, नीदर लाइफ नॉर मेडिकल. लेकिन एमएचए का एक ऑर्डर आया था 15/4/20 को, जो वैलिड रहा था 17/5/2020 तक, जिसमें उन्होंने वर्कर्स की मेडिकल हेल्थ ऑब्लिगेशन कंपल्सरी मैंडेटरी ऑब्लिगेशन की थी. सो अगर आपने इस पीरियड में अपने वर्कर की कराई है मेडिकल इंश्योरेंस, चाहे 6 महीने की चाहे साल की, आप एग्जेम्प्ट रहेंगे. और अगर आपने इस पीरियड के बाद कराई है, नो, नॉट एट ऑल. और सर याद रखना, सिर्फ वर्कर्स की, neither their family members nor the employees. So other than that, medical masks, sanitizers, thermometers, whatever, the sanitization, the transportation of employees, whatever you are providing is 100% eligible, and so is your CSR activity. Sir, बहुत ज्यादा चल रहा था, क्या जो माइग्रेंट वर्कर्स को फूड प्रोवाइड किया जा रहा है या शेल्टर्स प्रोवाइड की जा रही हैं, whether it is the part of CSR, sir, MCA Companies Act में स्पेसिफिकली 10/4/2020 को MCA ने एक सर्कुलर इशू किया और कहा कि यस सर, ये एक्टिविटीज तो पहले भी CSR थी. पीएम केयर फंड को भी उन्होंने CSR डिक्लेयर किया. और सर, इसमें तो क्वेश्चन नहीं है राइज होता आईटीसी का, क्योंकि ये मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन है पीएम केयर फंड. लेकिन जो माइग्रेंट वर्कर्स को फूड शेल्टर आप प्रोवाइड करो, इट इज पार्ट ऑफ CSR. और CSR किए बिना सर कंपनी रन नहीं कर सकते. इट इज अ मैंडेटरी ऑब्लिगेशन. व्हेन इट इज अ मैंडेटरी ऑब्लिगेशन, यस, you are liable to take the ITC and no provisions of section 17(5) will be hit. लेकिन याद रखिएगा, पीएम केयर फंड CSR में कवर्ड है, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड या स्टेट रिलीफ फंड कवर नहीं है. So with this, if a particular activity is the part of CSR, yes, you are eligible to take credit if it is not a monetary contribution, or if it is not a part of CSR, then the provisions of 17(5) are to be checked. So with this, I end up my deliberation. Here I have produced, क्योंकि आजकल हमें HSN और रेट ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, कोविड किट्स का, टेस्ट किट्स का, N95 mask, etc. का. So this list I have reproduced here by marking those entries specifically in red, कि PP kits पे क्या रेट है, क्या उनके कोड्स हैं, so that you can refer for. And thank you so much for such a patient listening, covering all the aspects. I am indeed thankful. Thanks a lot, and over to you, sir.
Bhupender, kindly unmute. Unmute. Hello, am I audible? Yeah, sir. Yeah, thank you very much, madam, for the presentation. As I had already mentioned that we'll be starting with a seasoned captain and आप उस पे खरे उतरे and you guided all the players fantastically. Acha, madam, there are few questions which I would like to start with. The first question is, what about the dietitian services? Sir, देखिए, if a person is a dietitian and is a degree holder, is an authorized medical practitioner and qualifying to that, yes. But if it is a normal person, आजकल बहुत सारे लोगों ने ऐसे diet clinic start किए हुए हैं, so they will not be covered by the healthcare exemptions. They will be taxed. Okay. What is to be done when only retailer is unregistered or composite dealer and wholesaler and manufacturer are registered under GST? I think this is regarding to reversal of ITC. I hope so. Hello. 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 Well, disconnected, it seems. Let us wait. Oh, yeah. I think there's some issue from her side. Aanchal ji, can you hear us? We cannot see you. Hello, ma'am. Are you there? I think there's some connection issue with her. Let us wait. Yeah, sir. Am I audible? Yes. Now you're Okay, audible. the connection was lost in between. Very sorry. Yeah, please. Can I start with the question, ma'am? The Yeah, question sure, is, sir. Sure. what is to be done when only retailer is unregistered or is a composition dealer and manufacturer is or wholesaler are registered under GST? Yes, sir. सर जो ये आई थिंक सो रेफर कर रहे हैं जब हमने एक्सपायर्ड मेडिसिन का केस डिस्कस किया था. तो अगर सर आपका रिटेलर है तो वो बिल ऑफ सप्लाई या कमर्शियल इनवॉइस इशू करेगा. सो व्हाट विल हैपन, द रिटेलर विल गेट, अब डिपेंड करता है कि वो फ्रेश सप्लाई कर रहा है या क्रेडिट नोट के थ्रू कर रहा है. सो जो होलसेलर है हु इज रजिस्टर्ड, वो नॉर्मली आगे अपना इनवॉइस जो है वो अगर वो फ्रेश सप्लाई में जाना चाहता है तो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा, और अगर वो क्रेडिट नोट के थ्रू जाना है तो वो क्रेडिट नोट इशू करेगा. यानी द चेन विल शिफ्ट टू अपवर्ड और डाउनवर्ड एज इफ द मैन्युफैक्चरर इज रजिस्टर्ड. सो कोई चेंज उसमें आएगा नहीं, चेन कैन कंटिन्यू. Okay. Next question is, if a healthcare clinic allocates a space in clinic for a toothpaste company to sell products and charge a fee, will that be chargeable to GST? Yes, sir. It is a renting income, and renting income is not exempted. It will be chargeable because they are renting it to a toothpaste company. So rental incomes to any sort of hospitals, clinical establishments, yes, those are taxable. And one thing more, when they are considering it taxable, they have to check the exempt plus taxable supplies to check the threshold limit of 20 lakhs. Okay. And the next question is, if a healthcare clinic is doing exempt and taxable services, then how to reverse inputs for, say, rent of clinic between taxable and exempt? Sir, the provisions of Rule 42 and 43 will become applicable. Rule 42 deals with the inputs and input services. Rule 43 will be covering your capital goods. It will be divided on the basis of turnover. जो कि खर्चे स्पेसिफिकली टैक्सेबल के लिए फुल क्रेडिट एलिजिबल, जो खर्चे स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट के लिए नो क्रेडिट्स एलिजिबल, एंड कॉमन एक्सपेंसेस विल बी टेकन इन द टर्नओवर रेशियो. इफ अ पर्टिकुलर मेंबर्स नीड्स द वर्किंग ऑफ रूल 42-43, they can contact me. I will send them the Excel sheets which I have with me for the working of 42-43. Okay, ma'am. The next question is, what is the time limit for issuance of credit note in case of expired medicines? Suppose the date of purchases is 1st of January 2019 and medicines have got expired on 30th of June 20, मतलब 1.5 साल के बाद. What is the time limit to issue credit note? The time limit for credit note made for the normal purchases, made for the expired medicine is same.
एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से जो नेक्स्ट सितंबर आएगी उसकी ड्यू डेट यानी 20th अक्टूबर. अब सर ने जो मेडिसिन थी वो जनवरी 2019 की परचेज थी, सो हिज टाइम पीरियड विल बी सितंबर 2019 ड्यू डेट रिटर्न व्हिच इज 20th October 2019. So now if his medicine are getting expired, either he should resort to fresh supply वाला issue, fresh invoice से return करे, और commercial credit note is the option. Okay. Next question is, what would be the treatment of GST input on items purchased to be distributed as free gift? The entity does not manufacture those items. Sir, free gifts whether manufactured or purchased, the treatment is same. वैसे मैंने अपनी presentation में deal किया था, आपको input tax credit reverse करना पड़ेगा if it is not a taxable supply. The circular also specifically deals with it. Okay. Next question is, what about taxability of extracurricular activities for which schools charge separately? Yes, sir. Presentation में वैसे इसके ऊपर मैंने AAR डाली थी, but due to the paucity of time I didn't discuss it. Sir, extra देखिए दो चीजें हैं. एक तो है मैं एक कोर्स करा रही हूँ जो टैक्सेबल भी है और जो नॉन टैक्सेबल भी है, राइट? अगर तो मैं उनको क्लब कर रही हूँ जानबूझ के, so then it will can be taken as a mixed supply. तो गवर्नमेंट उस पे टैक्स, but the extra curricular activities which are given to the students is 100% exempt because it is taken as a composite supply and no tax will be levied on it. Okay. Please clarify GST applicability to a proprietary concern providing preschool education to small kids. Concern is not an educational institution. Sir, preschool I already distinguished. If it is a preschool, but the word education is embedded with it. मतलब आप पढ़ा रहे हैं. It is not a daycare service. If you are just making the child sit, toys दे रहे हो, खिला रहे हो, daycare कर रहे हो, then it is taxable. But if you are, यानी आप बच्चे को play school में education दे रहे हो, books है, there is particular thing you are teaching them up, they will be going to the next session. If it is a preschool, चाहे उसकी आगे classes नहीं है, वो सिर्फ 3, 4, 5 साल तक के बच्चे को ही पढ़ाते हैं, but preschool education is also exempt, whereas daycare services are not exempt. Okay. Please clarify GST on fooding and lodging provided to school by an other person, by any other person, sorry. Sir, वैसे मैंने ये during the presentation discuss किया था, अगर food की services outside caterer दे रहा है, तो it is not exempt. 5% tax लगेगा. If it is the canteen is run by the school itself, then it is exempt. Sir, कल मुझे किसी ने कहा मैं ऐसे करता हूँ, I change it a bit. What I do, catering वाला स्कूल को सर्विस दे देगा, स्कूल आगे बच्चों से ले लेगा, सर तब भी टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि केटरिंग सर्विस स्कूल को एग्जेम्प्ट है. वहां उनका कॉलेज था, कॉलेज को एग्जेम्प्ट नहीं थी और वो कह रहे थे मेरा कैंटीन कॉलेज में चल रहा है. सो कॉलेज को भी अगर स्कूल को केटरिंग की सर्विस इनपुट आती है एग्जेम्प्ट, कॉलेज को अगर कैंटीन की सर्विस इनपुट आती है 5% टैक्सेबल. हाँ, कॉलेज और स्कूल बच्चों से, स्टूडेंट से, फैकल्टी से जो चार्जेस लेंगे उसके वो एग्जेम्प्ट ही रहेंगे. Okay. How about the construction services provided to a trust for building infrastructure? 100% taxable, sir. No exemption is being provided to it. And furthermore, उसकी credit eligibility भी section 17(5) के according चलेगी. Construction service का they will not be able to take the inputs. Okay. Taxability of rent paid by educational institution to outsider. Kindly clarify. Sir, rent paid, it means input service to educational institution. Rent is not an exemption. GST will be levied. Only the 5 services to school and a few to the others I have mentioned, only those input services are exempt. Okay. Construction services taken by school for school building, is it exempt or taxable? Taxable, sir. Taxable. In case without credits even. Yeah. In case a school has outsourced canteen service to outside entity and that entity charges for fooding to user, what will be the treatment under GST? I think so it's a repetition. So the same question I already did. Okay. Do charitable institutions have to pay GST under RCM?
Sir, the question arises, yes, even the RCM provisions are applicable, but let me come to the advocate services. There is an exemption in case of advocate services if it is not provided to a business entity. And because charitable institutions are not considered as being provided to they are not considered for business entity as of now, according to my limited view. So they can take the benefit of that exemption notification for input services of an advocate. But otherwise, the provisions of Section 24 are equally applicable to a charitable institute also, subject to the exemptions given under 1217. And specifically, I mentioned about the advocate services because charitable institute, if take the services of advocates, they can take the benefit of serial number 45 of 12 by 2017, not being a business entity. Okay. Ma'am, it's just a question, dentist. I think that, this is put up when we had taken up the dietitian services. I think this is for dentists. I think so. Okay. So dentists are also exempt. They are also authorized medical practitioners holding particular degrees. Their services are healthcare services. Okay. I think this is the last question. Charitable trust has 10 branches. Out of these, 6 are providing exclusive exempt services. Whether the 6 exempt branches are required to be registered under GST, and in the same question, whether in same or different state. Got the issue, sir. The question is related to Section 22 provisions. Okay. Where it says every person jo ki taxable supply kare is liable to be registered. So if I go normally by the wordings of Section 22, so those branches which are not providing any sort of taxable services are not liable to get registered. But however, like you saying कि वो उनको सिर्फ donation income आती है या other sort आती है, so you can skip that up. But if I come to a normal business entity which is not a charitable, and you say they are not providing any services or something like that, so in that case, sir, आपको check करना पड़ेगा कि या तो वो आपका storage house है या other things है, वो डायरेक्टली आउटसाइडर को सर्विस नहीं देते हैं, बट आपकी एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को तो सर्विस रेंडर कर रही है ना. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 22 गेट्स हिट. सेकेंडली सर, इन दिस केस जब हमने थ्रेशोल्ड लिमिट देखनी है, सो 26 का ध्यान रखिएगा, ओवरऑल एंटिटी की देखनी है. यस, बट आप जब उसमें आपकी कोई ब्रांच बिल्कुल एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट में डील करती है, तो सेक्शन 22 में वर्ड टैक्सेबल सर्विसेज का बेनिफिट लेते हुए यू कैन स्किप दैट. Okay. I think, ma'am, there's one last question. Is GST to be levied on membership fees collected by charitable trust from its members, trust registered under Section 12AA? Sir, membership fee for the charitable activities, I think so, sir, is going to the issue of RWA, societies, charitable organization charging fees. Sir, abhi because ye sare concept of mutuality pe chalte hain, right? But sir, yes, let me tell you, although if we don't go into litigative part, Section 2 clause 70, Section 2 subsection 17 clause E ने स्पेसिफिकली बिजनेस की डेफिनेशन में क्लब्स एसोसिएशंस को इंक्लूड किया है. सो व्हेन दे हैव कंसिडर्ड इट बिजनेस पर्पस, द जजमेंट, रीसेंट जजमेंट 2019 में आई थी कैलकाटा क्लब्स की, which said the concept of principle of mutuality still applies. The GST does not hold it good. That does not hold good in GST regime until or unless challenged. I don't talk about the challenging it in a writ petition or somewhere, but ultimately the constitutional provision section 366(29)(a) also makes it taxable. Concept of principle of mutuality is not applicable by specifically bringing it into the definition of business. So as a result, the membership will be taxable. Thank you, ma'am. There are few other questions I would like to please. Yeah, madam, what about the skin treatment? Like what dentist and dietitian का था, उसी related होगा. What about the skin treatment? Sir, if it is cosmetology, yani if you are going for any sort of transplantations and cosmetic plastic surgeries, then it will not be covered. But if it is done to prevent some injury, deformity, or some sort of, like I told you, acid effects, then only the cosmetology section will be considered as healthcare. But the normal jahan transplantation cosmetology hoti hai, that will not be included. Okay.
How about hospitals paying advocate fees? Whether RCM will be applicable? Sorry, sir. Advocates paying? Hospitals paying advocate fees. Sir, already told the provisions are similarly applicable. Input services to hospital is not exempt. So as a result, if there is RCM, yes, they are liable. Sir, इसमें भी ना एक litigative issue आता है. If you want me to just touch it up a bit, Yeah, Section 24 starts with a non-obstante clause, notwithstanding anything contained, but it only writes Section 22. तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि अगर मैं बिल्कुल एग्जेम्प्ट हूं, मैंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराई, ओइंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 23, सो मेरे ऊपर आरसीएम नहीं लगेगा. बट अगर ये एक छोटा हॉस्पिटल है और ज्यादा लिटिगेशन में नहीं जाना चाहते हैं, सो यस, आरसीएम प्रोविजंस आर एप्लीकेबल. बट इफ यू वांट टू गो इन अ लिटिगेशन लाइक इन सम लीकर कंपनीज, आई हैव सर्टेन क्लाइंट्स हु आर लीकर कंपनीज, अब उनमें भी सेम है, दे आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, बट बिकॉज ऑफ आरसीएम दे गेट कवर्ड. So similar way, sometimes they, owing to the benefit of non-obstante clause, they have not got themselves registered under the GST Act, because they can go into litigation and they can afford it. So that's way. Otherwise, normally saying yes, it is applicable. Madam, this question is a little bit longer. तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप सुन लीजिएगा please. A charitable organization received goods from various donors like new or old clothes, household goods, etc. The organization sells these products online through their portal and earns sales revenue, which of course will be liable to GST. The funds received are used exclusively for NGO activities. Since purchase is nil and sales is there, will RCM be applicable on such donations received in kind? Will the donor be entitled to receive ATG certificate? Sir, he is talking about the donation. Certainly, the sales the institute is making is taxable beyond doubt. No, nothing in that. But the donation which is receiving, as I can guess from his question, it is absolutely for philanthropic purposes and not any commercial purposes. वो person उनसे कुछ demand नहीं करते. He's just giving them the old clothes and all. So particularly dealt by the circular that the donations are not taxable, and so here the old clothes etc. received will not be covered by any sort of taxability. If any commercial benefit is obtained out of donation, then it loses the character of donation. Otherwise, the donations are not taxable. Just a moment, ma'am. One more query. Whether Calcutta club case, incorporated and unincorporated clubs are on different footings? Yes, sir. They have just dealt with unincorporated, not the incorporated ones in Calcutta club. It is, this is an out of text question as of now, but yes, it only deals with unincorporated. I think the questions are finished. Now I would hand over the charge to Advocate Sanjay Sharma ji for vote of thanks. Sanjay Sharma ji, sir. Hello. Hello. Yes, now I have been unmuted. Yeah. Okay. Namaskar, sir. Namaskar, namaskar. Friends, Hare Krishna to all my viewers. It's a sweet duty has been assigned to me to propose a vote of thanks to especially to the young and dynamic speaker, CA Aanchal Kapoor, who has given such an elaborative, educative talk on the subject, charitable institutions, education and healthcare sector under GST. She had been extremely lucid and clear in her presentation. Friends, we thank her for her spontaneously responding to the queries of the professionals to their utmost satisfaction. Almost every query has been responded by her very efficiently. On behalf of the consortium, I thank her from the core of my heart for giving such a very nice presentation. I appreciate her zeal and enthusiasm in this knowledge dissemination. We see that your concept clarity is impeccable, ma'am.
And The pleasure I is also- all mine to interact on this platform. on behalf of the consortium, I thank all the professionals who have joined us on this Saturday morning session of this webinar series, second session, which has been aptly opened up by the young speaker, Aanchal, and she had started with the master strokes, I would say. And friends, we are hopeful that all of you will be, must have gained from this session, today's deliberation, and we hope that we seek your wholehearted participation in the future programs. Friends, I thank you once again, and to the learned speaker. Stay safe, stay healthy, and stay blessed. Thank you. Thank you, Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Sanjay ji. Mr. Ravani gave me this opportunity just 5 minutes back, and I wanted to grab it because Aanchal is very dear to me, and I wanted So you have always been a motivator, and your wishes and blessings always count a lot. Always, Thanks a lot, always. sir. Thank you, Sanjay ji, for the beautiful vote of thanks. And thank you, Bhupender, for conducting the session very nicely. Thanks, Thank you very madam. much, sir. Thanks, madam, for the elaborate presentation. Friends, some announcements before we end. Tomorrow again, we have the next session on classification under GST. The speaker is Rajendra Kumar P, Central Council member of ICAI from Chennai. So please join at 11:30. One important announcement. We have announced an Ind-AS series, education series of 13 sessions of 3 hours each. That's around 39 hours of learning. The registration fees is 300 rupees. The details have been shared. All are requested to kindly join in because we have lined up some of the best faculties for that, and request you all to take advantage. Thank you very much. Looking forward to see you again. Thanks all. Bye-bye.